start. It was accepted that the status of employment of the workman was throughout at Patna in the state of Bihar stop. The employer company did not have a separate establishment in Bihar, the registered office being at Calcutta stop. The business in Bihar was controlled from the head office at Calcutta stop. On behalf of the petitioner, it was argued that it is the status of employment of the workman which is relevant for determining the territorial jurisdiction of the tribunal to entertain the dispute and not the location of the employer industry or the mere factum of having a separate establishment within the state of Bihar stop. On behalf of the respondent company, it was argued that status of the employment of the workman was wholly irrelevant to the issue stop. The governing factors for the jurisdiction of the tribunal was the location of the office of the industry alone, either at its headquarters or where it had a distinct separate establishment stop. Sandhwalia, C.J. speaking for the full bench after noticing the judgments of the Supreme Court and the Bombay High Court in Lal Bhai Trikumla Mills Limited case Supra held as follows stop. From the above, it would appear that the aforesaid case in a way covers the issue herein on all fours by holding that the subject matters of the industrial dispute arises at the situs of employment of the workman stop. However, in the above case, the question whether there can also be concurrent jurisdiction at Bombay and Ahmedabad was left open by the bench stop. In paragraph 13 of the judgment, the full bench laid down the following principles for the determination of the jurisdiction of a particular state government for making the reference under the Act stop. Now, an incisive analysis of the aforesaid authoritative enunciation of law would indicate that three clear-cut principles or tests for determining jurisdiction emerge therefrom stop. For clearly these may be first separately enumerated as under stop. Where does the order of the termination of services operate stop? Is the sum nexus between the industrial dispute arising from termination of the services of the workman and the territory of the state stop? That the well-known test of jurisdiction of a civil court, including the residence of the parties and the subject matter of the dispute substantially arising therein, would be applicable stop. A perusal of the aforesaid an enunciation of law by the apex court, by the Bombay High Court and the Patna High Court makes it clear that the question of jurisdiction is to be determined by taking into consideration the three principles enunciated above by S.S. Sandhwalia C.J. Stop. One of the primary tests
is where the impugned order of termination of services of a workman in fact operates. Stop. In workman of Shri Vilas Motors case Supra, the order of termination was passed at Krishnagiri in Kerala. Stop. It was, however, held that the order operated at the place of employment of the workman. Stop. This has been held to be paramount factor if not being wholly conclusive. Stop. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है, और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है। आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है, ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट की हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।